Assalamu alaikum. This is Khadija Sattar here, and the topic of today's podcast is um, the Sustainable Development Goal, quality education, goal number 4. All right. So, why is quality education the most important aspect, of life today, and how does it, encourage the growth of economic development and such in a very sustainable way? Since 2000, there has been enormous progress in achieving the target of universal primary education. The total enrollment rate in developing regions reached 91% in 2015, and the worldwide number of children out of school has dropped by almost half. There has also been a dramatic increase in literacy rates, and many more girls are in school than ever before. These are all remarkable successes. Progress has also faced tough challenges in developing regions due to high levels of poverty, armed conflicts, and other emergencies. In Western Asia and Northern Africa, ongoing armed conflict has seen an increase in the proportion of children out of school. This is a worrying trend. While Sub-Saharan Africa made the greatest progress in primary school enrollment among all developing regions, from 52%, um, yes, in 1990 up to 78% in 2012, large disparities still remain. Children from the poorest households are 4 times more likely to be out of school than those of the richest households. Disparities between rural and urban areas also remain high. Achieving inclusive and quality education for all reaffirms the belief that education is one of the most powerful and proven vehicles for sustainable development. This goal ensures that all girls and boys complete pre-education and secondary schooling by 2030. It also aims to provide equal access to affordable vocational training and to eliminate gender and wealth disparities with the aim of achieving universal access to a quality higher education. Now, this was something, I read from the SDG Fund website. But what is the mission statement of Sustainable Development Goal number 4? To ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल तो हो जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, स्टेट स्कूल्स में होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो. Furthermore, this goal, it ensures that all boys and girls, should be attending school by 2030. So, while there are other sustainable development goals as well, like no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender and equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, etc. तो इसमें I think the most important one is quality education. कि first quality education होगी तो फिर हम बाकी problems को eliminate कर सकते हैं. बाकी problems like gender inequality है और health के issues हैं, water और sanitation के problems हैं, clean affordable energy नहीं है और या sustainable cities नहीं है. क्लाइमेट एक्शन पे अवेयरनेस नहीं फैलेगी, एजुकेशन होगी तो हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, हंगर को खत्म कर सकते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जब एजुकेशन ही ठीक नहीं मिलेगी तो हाउ कैन वी कोई तरीका है ही नहीं कि बाकी हम इश्यूज को खत्म कर सकें. तो तो अब बाकी हम इस तरह कर सकते हैं कि फर्स्ट एजुकेशन को किस तरह हम क्वालिटी एजुकेशन बनाएं और साथ ही साथ उसको अफोर्डेबल भी करें. यूजुअली जिस तरह कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, इन कंट्रीज में सबसे बड़ा इशू है कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी होगी, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन भी होती है और लेकिन वो एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेट स्कूल्स में मिलेगी जिसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई कॉस्ट होगी. एजुकेशन जो हमें जिसकी प्रॉपर क्वालिटी नहीं होती, जिस तरह हमें यूजुअली गवर्नमेंट या स्टेट स्कूल्स में मिलती है, वो इनएक्सपेंसिव तो होगी बट मतलब इट डजंट हैव अ क्वालिटी.
आई थिंक उसका फायदा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को आप बजाय ये सिखाने कि व्हाट्स आउट देयर फाइटिंग विद इट, आप you're just रोड लर्निंग होती है एंड स्कूल का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं होता, तो आगे जाके फिर दे कैन बी प्रैक्टिकल। वो उसको जो उन्होंने सीखा है उसको प्रैक्टिकल में पुट इन ही नहीं कर सकते, बिकॉज सारी जिंदगी जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा है देखा है, इट्स जस्ट के आपने कुछ सबक याद करना है and then you've got to exams, you've got to perform well in your exams and that's it. I think providing quality education for all is fundamental to creating a peaceful and prosperous world. Education gives people the knowledge and skills they need to stay healthy, get jobs, and foster tolerance. The COVID-19 outbreak, however, has caused a global education crisis. Most education systems in the world have been severely affected by education disruptions and have faced unprecedented challenges like school closures that they have brought on by the pandemic. They have devastating consequences for children's learning and well-being. It is estimated that 147 million children missed more than half of their in-class instruction over the past 2 years just because of COVID-19. This generation of children could lose a combined total of billion, um, 17 trillion dollars in lifetime earnings in present value. They have affected girls, children from disadvantaged backgrounds, those living in rural areas, children with disabilities, and children from ethnic minorities from their peers. The proportion of young people, it is a fact, is those completing upper secondary school increased from 54% in 2015 to 58% in 2020, progress slowing from the preceding 5-year period. Data from 73 countries, mostly in the low and middle income bracket, indicate that between 2013 and 2021, about 7 in 10 children who are 3 and 4 years old are developed on track. After all of this, we get a good idea of another fact that only 20% of countries undertook significant measures to provide additional mental health and psychosocial support for students after school reopening. हमारी कंट्रीज जो है लाइक डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, उन सब में ये हुआ कि इवन पाकिस्तान में भी, डिस्पाइट इट बीइंग डेवलपिंग कंट्री, टेक्नोलॉजी तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो यहाँ भी सिस्टम ये था कि ऑनलाइन क्लासेस का, बट अगेन एक प्रॉब्लम था, इंटरनेट प्रॉपर था ही नहीं, तो क्लासेस कैसे ली जाती, और क्वालिटी भी जो थी इन क्लासेस की, मतलब वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और एक और बात जो हम देखते हुए ये है कि हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में ये नहीं कहती कि सीखनी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली एक ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पूरी दुनिया में मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में हमारी मदर टंग, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो उस पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्योंकि अक्सर जो पॉपुलेशन है हमारी, जो मोस्ट ऑफ द पीपल over here they speak उर्दू, ठीक है, पंजाबी भी है बट मोस्ट ऑफ देम स्पीक उर्दू। अब जब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इवन ऑफिसेज में, कुछ ऑफिसेज में इंग्लिश होगा, या तो स्टूडेंट्स कैसे प्रोग्रेस करेंगे? तो या प्रॉपर आप उनको बचपन से इंग्लिश सिखाएं, उनको उस तरह से उनको उनकी मेंटोरिंग करें उनको इस चीज़ पे, क्योंकि बास कंजर्वेटिव कुछ फैमिलीज होती हैं खासतौर पर रूरल एरियाज की, दे आर नॉट विलिंग एंड एक्सेप्टेबल टू द फैक्ट कि हमें सीखनी चाहिए ये इंग्लिश, बिकॉज they're like kind of living in the past and they don't just understand कि उनको लगता है कि इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, हमें अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत करना चाहिए, इट्स अ साइड ऑफ पैट्रियटिज्म, इट इंडीड इज। इंग्लिश कम सेकंड, फर्स्ट आप अपनी जबान सीखें, उसमें प्रॉपर आप मतलब प्रोग्रेस करें, आपको अच्छी तरह आए, यू जस्ट मास्टर इट, और फिर आप इंग्लिश की तरफ आए। लेकिन इंग्लिश भी आई थिंक हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, जिस तरह आप कोई डिवाइसेस यूज करते हैं, आगे जाके आपके कोई इंटरव्यूज होंगे या अब्रॉड स्टडीज के लिए इंग्लिश ही आपके काम आएगी। तो इस पे भी फोकस कराएं स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश वो सीखें, और सिर्फ इंग्लिश एक बड़ा इशू नहीं है, टेल देम अबाउट एजुकेशन इज मच मोर देन लर्निंग समथिंग द क्लासरूम, जस्ट एग्जाम्स और टीचर ने जो पढ़ा दिया वो सीख लें। एजुकेशन प्रॉपर होगी हर शख्स की,
प्रॉपर मतलब इक्वालिटी हो, अमीर गरीब को कोई फर्क ना, प्रॉपर स्कूल्स बने जिसमें अमीर शख्स का बच्चा भी पढ़ता है और गरीब शख्स का भी। उससे फायदा होगा कि पहले तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इनक्वालिटी खत्म होगी, रिड्यूस इनक्वालिटी विच इज अनदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और फर्दर जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से होगी कि जितना क्वालिफाइड, जितना वेल अवेयर स्टूडेंट होगा, कैंडिडेट होगा फॉर द जॉब, उतना ही उसको उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी तो काम वो ज्यादा ज्यादा आउटपुट देगा, एफिशिएंटली काम करेगा, हिल बी इफेक्टिव, और as output would increase, GDP भी बढ़ेगा, not only the country would benefit from that, उसके आगे जाके स्कोप भी ज्यादा, उसका करियर उस शख्स का बेहतर हो जाएगा। करियर के साथ साथ वो इस बात में ज्यादा वेल अवेयर हो जाएगा कि जो आपकी जमीन है, प्लेनेट अर्थ, उसे किस तरह आपने बचाना है, हाउ टू कंजर्व नेचर, हाउ टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज, किस तरह उनकी सपोर्ट बनना है, वो लोग जिस तरह इंडिजिनस पीपल है, एनिमल्स हैं, दोज हु कैंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स लाइक द डिसेबल्ड, लाइक द ओल्ड पीपल, उनके लिए किस तरह आवाज उठानी, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते और कोई और नहीं आएगा उनके लिए करने। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज मुस्लिम्स, हमारा फर्ज है कि हम सिर्फ अपना नहीं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी उनके लिए भी हम एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें उनके उनके रहने की भी जगह हो और खुशहाली हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और ये सिर्फ हो सकता है एजुकेशन से। एजुकेशन नहीं होगी तो फिर इलिटरेसी होगी, जहालत होगी, और जहालत का नतीजा ये है कि हम ना सिर्फ अपनी अपनी हम ग्रूमिंग कर सकते हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी हम कुछ खास नहीं कर सकते। और कोविड-19 में क्या हुआ था, among 59 million children, 1 in 5 of them had dropped out. And recent trends suggest that 2 in 5 of out of the school children will never set foot in a classroom again. The Sustainable Development Goals clearly recognize that this gap must be closed, even as the international community must explicitly address the challenges of quality and equity in education. अब बाकी जिस तरह हमारे SDGs हैं, which is I think the most crucial thing of the day, ये हमारे कुछ टारगेट्स क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पीस, ये जो SDG 16 है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, वो भी तब होगा जब प्रॉपर आप इंसान जो है वो मतलब ना सिर्फ उनकी तरबियत अच्छी हो, उनको एजुकेशन भी ठीक मिली हो, अच्छे, अगर हमारा जो डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, और जिस तरह जस्टिस सिस्टम है उसमें अगर लोग ही इस तरह के आएंगे हु आर बायस्ड और मतलब इम्पार्शियल, तो हमारा मुल्क कैसे ही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और उसकी बड़ी रीजन ये है कि सिर्फ रिश्वत ही नहीं, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, एंड पाकिस्तान का आउट ऑफ 140 कंट्रीज उसका 129th नंबर है, almost 130th, who are quick in giving justice, in providing justice to the people. तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है जब हम जस्टिस नहीं देंगे। और कहीं कहीं तो ये भी आउट ऑफ 139 कंट्रीज 130th नंबर है पाकिस्तान का, विच इज समथिंग रियली एम्बैरसिंग कि इंटरनेशनल हमारी जो रेपुटेशन है वो इतनी खराब है कि हम लोग ना जस्टिस देते हैं, हमारी पॉवर्टी के इश्यूज हैं, ऑनेस्टी नहीं है, और मतलब एवरीवन इज जस्ट इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, क्योंकि वो यहाँ जाके तंग आ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जितना नुकसान है वो यहाँ करना पड़ता है, फ्लड्स इन बलोचिस्तान, फॉरेस्ट फायर्स और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, तो इसका नुकसान होता है हम लोगों को। एजुकेशन से क्या होगा कि पहले तो लोग दे विल बी अवेयर ऑन ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, उनके नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट्स क्या है एक्सेट्रा, and then they will be able to do something about it. तो आई थिंक इन पॉडकास्ट का मेन मकसद यही है कि लोगों तक ना सिर्फ अवेयरनेस पहुंचे, बल्कि वो प्रैक्टिकली उसको इम्पोज करें गवर्नमेंट को, यानी देर देर प्रॉपर वेज थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए आमादा करें कि वो कुछ रूल्स, कुछ लॉज बनाए कि
मतलब एजुकेशन जो हो जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में होती है, बिल्कुल क्वालिटी उनकी उतनी हो जाए, उस रैंक में ज्यादा हो, और साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी हो। क्योंकि हमारा जो यूजली जो पूरी कम्युनिटी है उसमें अक्सर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, जो उतनी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉपर तालीम। दे सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल अनडाउटेडली, मगर फायदा नहीं है। जब एजुकेशन का मयार ही अच्छा नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या हासिल करेंगे। तो ये कुछ इस तरह के लॉज इम्प्लीमेंट करवाएं, और मतलब कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट हम लगा सकते हैं, और